Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for the basic concepts of commerce stream. Herein we discuss all the topics relating to commerce stream, whether it is from financial management, management accounting, cost accounting, microeconomics, business communication, principles of management, and many more. So the topic that I'm taking for today's video is price elasticity of demand. That is a topic from microeconomics and it is related to class 11 according to CBSE. Thereafter, it is there in BBA semester 1, it is there in Bachelor of Commerce, it is there in MBA as well, along with Masters of Commerce, and it is a very important topic if you are preparing for NTA NET, UPSC exam, because there also we have some part of microeconomics. So before starting the video, I would request all of you to please subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, because I keep on posting the questions on the channel that will help you a lot in the quick revision of the concepts that we discuss here on the channel. Now let's start today's video, price elasticity of demand, its meaning, types and degrees. First of all, what is price elasticity of demand? लॉ ऑफ डिमांड में हम सभी ने पढ़ा है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. बट क्या ये थ्योरी, ये लॉ सभी तरह के गुड्स में एप्लीकेबल होता है? क्या हमारा बिहेवियर हर गुड के लिए सेम होता है? क्या सभी गुड्स ऐसे होते हैं जिन पर प्राइस बढ़ने या कम होने का असर होता है? क्या सभी गुड्स के केसेस में प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड कम हो जाती है? अगर कम होती है तो क्या इक्वल परसेंटेज से कम होती है? क्या दूध के प्राइसेस बढ़ने से आपके डिमांड पर उतना ही चेंज आता है जितना आपकी डिमांड पर आएगा अगर मोबाइल के प्राइसेस बढ़ते हैं? नो, द चेंज विल बी डिफरेंट, द रिस्पॉन्सिवनेस विल बी डिफरेंट. In economics, we divide goods into various categories and these categories dictate how we are going to respond to price change for a particular good. So, प्राइस इलास्टिसिटी हमें वही बताता है कि प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड पर कितना चेंज आता है. So, in simple words, we can say price elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to change in its price, other things remaining constant. And in the video where we discussed law of demand, the other things that remain constant are price of other commodities, income of the consumer, population of the country, price of substitute goods, price of complementary goods, taste and preferences of the consumer, etc. Now coming to types or degrees of price elasticity of demand, first degree or first type can be perfectly elastic demand. That means the demand here is perfectly elastic, or we can say completely flexible. For the given price, you can sell any number of goods, but if the price changes even a little bit, nothing will be demanded at all. That means here the demand is highly sensitive to the prices. So जो आपका प्राइस है उस पर आप कितने भी गुड्स को सेल कर सकते हैं, बट अगर प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाता है, प्राइस थोड़ा भी चेंज होता है, then you will not be able to sell anything. That means your demand will be zero if you go beyond a certain or equilibrium price. This is highly impractical situation and this does not apply to the real life situation. It can be expressed as price elasticity is equal to infinity. That means it is highly elastic. Now let's have a look at the graphical representation of perfectly elastic demand curve. Second type or degree of price elasticity of demand can be perfectly inelastic demand. Now what does that means कि आपकी जो डिमांड है वो बिल्कुल ही inelastic है, fixed है. चाहे आप प्राइस को कितना भी ज्यादा कीजिए या कम कीजिए, आपके डिमांड पर असर नहीं होगा. So this basically applies to necessity goods or the goods where you are spending a very less part of your income. For example, matchbox, milk,
जहां पर या तो आप बात करते हैं नेसेसिटी की, तो अगर प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं स्टिल यू विल बी बाइंग द गुड्स बिकॉज दैट इज अ नेसेसिटी टू यू। या फिर बहुत ही सस्ती आइटम्स, बहुत ही इनएक्सपेंसिव आइटम्स जहां पर आप अपनी इनकम का एक बहुत छोटा पार्ट खर्च करते हैं, सो अगर उसके प्राइस बढ़ भी जाते हैं सो आपके डिमांड पर कोई असर नहीं आएगा। लाइक द एग्जाम्पल आई गिव ऑफ मैच बॉक्स, अगर मैच बॉक्स का प्राइस 50 पैसा से या फिर 1 रुपी से बढ़ भी जाता है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर डिमांड फॉर द मैच बॉक्स। Coming to the graphical representation of perfectly inelastic demand curve. Thirdly, unitary elastic demand. Here, the change in quantity demanded is going to be equal to change in price. अगर प्राइस में 10% चेंज आता है so आपका डिमांड भी 10% कम हो जाएगा। That means the change between price and quantity demanded will be equal, but obviously they will flow in opposite direction. अगर प्राइस बढ़ता है so quantity demanded कम होगा, but वो सेम परसेंटेज में कम होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स यहां पर जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा वो प्राइस में चेंज आने वाले परसेंटेज से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्राइस में चेंज आता है 10%, so the change in quantity demanded will be more than 10%. It can be 12%, it can be 20%, but the change in quantity demanded will be more than the change in price of the commodity. And lastly, relatively inelastic demand. That means the change in demand is going to be less than the change in prices. So we express it as price elasticity of demand is equal to less than 1. So here, if you have a 10% change in the price of the commodity, the change in quantity demanded will be less than 10%. It can be 9%, it can be 8%, it can be 5%, but it will be less than the change in price that you have had. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, comment and share. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.